Hello students, in this video I am going to discuss how to solve the numericals based on Nernst equation from the chapter electrochemistry in class 12. Now look at the question here. Calculate the EMF and delta G naught of cell reaction for the following cell at 25 degree Celsius. Magnesium form Mg2 plus with the concentration salt bridge Cu2 plus, the concentration of Cu2 plus ion and copper electrode. This vertical line is the symbol of salt bridge. Okay, before the salt bridge act as anode and after the salt bridge is the representation of cathode. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आप ऐसे लर्न कर सकते हैं ABC magnesium act as anode, it is undergoing the oxidation with the loss of 2 electron and copper is undergoing the reduction with the gain of 2 electron. So it act as cathode. You are provided here with the standard electrode potential of magnesium, that is minus 2.37 volt, and E naught of copper is 0.34 volt. Temperature is 25 degrees Celsius, that is standard 298 Kelvin. Nernst equation, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log anode over cathode. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, मीन्स 298 केल्विन दिया है, इसलिए हमने सॉल्ट फॉर्मूला लगाया नर्स्ट इक्वेशन का 0.0591 अपॉन n log anode over cathode. n is the number of electrons involved in the reaction. Here magnesium is losing the 2 electron and copper is gaining the 2 electron. So the number of electrons are common, that is 2. तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 2. E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. कैथोड की वैल्यू आपको कॉपर की गिवन है, दैट इज 0.34 माइनस 2.37, इट कम्स आउट टू बी 2.71 वोल्ट. ओके, नाउ E cell इज इक्वल टू 2.71, आपने E naught की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी 2.71 minus 0.0591, number of electrons involved in the reaction are 2 log. Firstly write down the Nernst equation for that cell. आप Nernst equation लिखेंगे for that cell तो आपके पास ऊपर आ जाएगा Mg2 plus because Mg2 plus is anode and Cu2 plus is cathode. 2.71 माइनस इसको इससे डिवाइड करिए 0.02955 log. यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज लिखेंगे, आपको मैग्नीशियम की वैल्यू गिवन है 0.001 and the copper concentration is 0.0001. So it comes out to be log 10. You have already known that the log 10 is 1. Log 10 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स. तो 2.71 माइनस 0.02955, आप इसको इसमें से सेपरेट करेंगे, you will get 2.68 volt. That is the value of E cell. Now look at the second part. Calculate the delta G naught. Delta G naught, the formula is minus NF E naught. N is the number of electron. तो n की वैल्यू आपके पास 2, Faraday is constant 96500 and E naught आपने पहले कैलकुलेट किया है इसमें E naught की वैल्यू, that is 2.71. 2 minus 2 into 96500 into 2.71, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 52330 जूल पर मोल. ओके स्टूडेंट्स, फिर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू इन किलो जूल, 523.03 किलो जूल पर मोल.